I think we will start. People will inshallah join in. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to another session of in series of Hepatitis Eco. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussions with experts, and our expert for tonight is Dr. Zeeshan Ali Junejo. Before I introduce you to our expert for tonight's sessions, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO, based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions, use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible and avail the opportunity of CMEs. For the convenience of spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight's session is Dr. Zeeshan Ali, is a fellow of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine at Jinnah Sindh Medical University and Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, Pakistan. He has been involved with Parsa Eco Pakistan since the very beginning and been a true eco champion. He is the ECHO lead in province of Sindh and has a keen interest in medical education. Currently, he also holds a portfolio of Senior Vice President, Pakistan Society of Hepatology. He is responsible for overseeing all the projects related to Sindh and enrollment of spokes locally. We have two cases today, and Dr. Mishal will be presenting them. I will now hand over to Dr. Mishal for the cases. Thank you, Kiran. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Uzair, please Walaikum salam. share your screen. Okay, so first case, it's about a 42 years old male who presented to us with left-sided facial periorbital swelling and facial puffiness for last 1 week. He's otherwise all right, and there are no other comorbidities. And his routine labs were advised. His HB is 15.3, TLC count is 8.1, platelets 210, ESR is normal, creatinine was 1.5, bilirubin 0.8, ALT, ST were raised. Alkaline phosphatase is 284, albumin 4.2, TSH 1.6, uric acid 6.8. His anti-HCV was positive, and HCV PCR was also positive. Hepatitis B surface antigen is negative, and his APRI score is 1.5. Ultrasound was normal except fatty liver. There was grade 1 steatosis. My question is, how can we explain the patient about facial puffiness and how to manage this patient? Thank you. Thank you, Michelle. That's an excellent case in hepatology. Anyone amongst the audience wants to comment on this, or any new information they want to know about? So this is a case. Can you scroll up a bit, Michelle? We can. Okay, that's fine. Okay. So this is a young male patient presenting with periorbital swelling and facial puffiness, and otherwise all right. So Hep C is, I don't know why it was carried out, but it was a wise decision to get it done, because hepatitis C is viral hepatitis known for liver disease, but it does have some extra hepatic manifestations as well. And when we talk about extra hepatic manifestation, then they are systemic, and these are inflammatory, immune related
diseases, which may be cryoglobulinemia, it may be glomerulonephritis, or it may be arthralgias only, it may be lichen planus on the skin. So there are very extra hepatic manifestations of hepatitis C. And in this particular case, it's not just the periorbital swelling which we are looking for. If we see a normal looking ultrasound with mild grade 1 steatosis, but the APRI is 1.5, that makes the case, is it cirrhotic patient? Now, this question one has to understand: in an acute hepatitis, the APRI may not be the marker of liver cirrhosis. With high ALT, AST, these patients, we had our own study which is not yet been published, but any ALT of more than 150 would over predict the liver stiffness based on APRI scores, or for that matter, these non-invasive markers. So we have to be careful when we see raised liver enzymes. And how can we explain about the patient facial puffiness? Whenever the patients come to you with a facial puffiness, what comes in the mind as medical students when we were, it is nephrotic syndrome. It has to be kidneys. So one should always look into that. And if you look at the creatinine in here, you can see the creatinine is borderline high. It's 1.5, and we don't have the urine DR, we don't have urinary protein to creatinine ratio. So the first thing which I would like to see is the renal status. Crat is high. I need to have a urine DR report and urine for microalbumin to look for the albumin urea. Though the serum albumin looks fine, but still the next step would be, in this particular case, would be to establish the renal disease, because there are two different type of extrahepatic manifestation with Hep C can be related. May I have commented in the chat MPGN related to HCV? Yes, it is possible, but for that, the first thing which we need to do is to get the urine DR done and urine for microalbumin to look for the protein urea in this particular case. So that was my answer to first case, because there is CRAT high and there are acute enzymes for the hepatitis C. These liver enzymes are suggestive of acute hepatitis C with the PCR positive as well. So first question would be answered: to more workup for renal diseases. How to manage? That would be the second question. Now, there are two types of different periorbital swelling. Can be because of either kidney disease, or it can be because of sialenditis, or a Sjogren-like presentation of extrahepatic manifestation that is called pseudotumor oculi or ocular pseudotumor, in which the lacrimal gland and the fat of the is an emergency, because you need steroids along with the antiviral therapy for hepatitis C to settle this for to prevent permanent damage. But that is a severe form. In this particular case, once we get the urine DR normal, we may look into that other cause. But if the urine DR is showing proteinuria and hematuria, that is very likely because of the glomerulonephritis, and we would look for the cryoglobulinemia in this particular case. Any other question related to management? Michelle, do you have another question related to this case? Sir, so how we will manage this patient? We will start with soft deck. Please Yes. 1.5, but ultrasound is normal. With all practical purpose, it looks like acute hepatitis. There doesn't seem to be. If this is MPGN or glomerulonephritis related to hepatitis C, then it urgently requires management with the antiviral therapy. We can start with oral therapies which are available in standard of care, soft TAC or soft Velpa, whatever is standard practice. In my practice, I usually start with soft TACLA. Most of my patients, as the CRAT is already high on higher side, and this patient may be having MPGN, I may not be very comfortable with starting with the ribavirin in this particular case. But the establishment of why this CRAT is high, looking for the renal disease is again very important part.
of managing, though it doesn't affect the management of hepatitis C. But yes, for the patient's management, overall management, yes, it is important. We should know the renal status of this patient. I would like next question, if you can ask us of DECLA for 6 months or 3 months, that is cirrhosis or no cirrhosis for this APRI. I might look into the other causes, because again, if we go send this patient for elastography or any other non-invasive methods for liver cirrhosis, all will over predict liver stiffness because of acute inflammation. I might repeat after 2 to 4 weeks of antiviral therapy, the liver enzymes and APRI and FIFO to look into the actual status of the liver disease. If it is because of acute inflammation, it is likely to settle in 4 to 6 weeks. Sir, is it possible to have normal liver enzymes when ultrasound is showing cirrhosis? Yes, this is very common finding. Ultrasound may show shrunken cirrhotic liver with dilated portal vein and splenomegaly, even ascites, and the patient may have a normal ALT, because this is a very established fact that when the liver gets cirrhotic, particularly at end stage liver disease, the enzymes are not high. They are most of the time normal. It may be reversed pattern, that the AST may be higher than the ALT, but it can be completely within normal range. So it's not uncommon to find cirrhotic patients to have normal enzymes. But these non-invasive tests generally over predicts in acutely inflamed liver, the liver stiffness. Because that they do predict liver stiffness, but that stiffness is because of acute inflammation rather than cirrhosis. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो। सलाम अनवर साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, खैरियत है बिल्कुल। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें चूंकि क्रेटिनिन 1.5 आई तो ब्लड यूरिया और ईजीएफआर इसका होना जरूरी था, वो इन्होंने नहीं करवाया हुआ, तो उससे जी जी स्टेटस जी। अब रीनल का पता चलता हमें। देखें, और ईजीएफआर तो हम यहीं पे बैठे बैठे अभी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि एज दी हाँ हुई जी, है हमारे पास और हाँ जेंडर जी, हमें मालूम है, क्रेट सामने रखी हुई है हमारे। तो ईजीएफआर तो हमें अभी बैठे बैठे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली हाँ जी, कैलकुलेटिंग ईजीएफआर ना। तो ये मेल हाँ पेशेंट जी, है, 42 ईयर है, एंड इसके क्रेटिनिन जो है 1.5 है। तो हाँ जी। ईजीएफआर इज 59, दैट्स क्लोज टू 60। अच्छा ठीक है ना? अच्छा जी तो जी ये बेसिक चीज पिक करने की यही है ना, कि पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग रेस क्रेटिनिन है, तो हमें किडनी के स्टेटस को देखना है। हेपेटाइटिस सी हाँ, तो इसका है, हाँ जी एंड जो एंजाइम पैटर्न है वो शायद हमें बता रहा है कि शायद ये एक्यूट हेपेटाइटिस है, लेकिन ये कि किडनी जी। पैटर्न को देखना है, किडनी में क्या हो रहा है इसके साथ, क्या ये हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है या एक सेपरेट इशू है। हाँ जी, ये जो हेपेटाइटिस की अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए सॉफ्ट डेक्ला, तो क्या किडनी वाली जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं होने का अंदेशा? जनरली स्पीकिंग सॉफ्ट डेक्ला या सॉफ्ट वेल्पा का जो है क्रेटिन क्लियरेंस से कोई बहुत ताल्लुक नहीं है। दे आर टेकन एज सेफ। जब आप राइबा ऐड करते हैं ना, तो राइबा की डोज जी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो 60 या मोर देन 60 के ऊपर उसकी भी डोज एडजस्टमेंट नहीं है, मॉनिटरिंग है। ठीक, राइट, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? Michelle, we can probably go to the next course if there is no further question on this case. Yes, sir. Zar, please share your screen. Okay, so second case, it's about 24 years old female who presented to us with nausea, vomiting. At that time, she was 3 months pregnant, and her anti-HCV and HCV PCR were positive. She was asked to continue her follow-up with her gynecologist and come back after her delivery. Now she came back again after 5 months of her delivery to start her treatment, and her routine labs were advised. You can see on the screen. There are like two tests. One is from January 22,
And the latest results. I'm sorry. Latest. Okay, now I'll stop. Her HB is 14.2. TLC count is 6.05. Her platelets are 270, and her creatinine is 0.38. Bilirubin is 0.26, ALT 73, AST is 51, alkaline phosphatase is 168. Okay. Her albumin is 4.25, and her HCV PCR is positive. And her APRI, I calculated her APRI. Ultrasound is normal. My question is, Uzair, please scroll up. She's breastfeeding. What about direct acting antiviral treatments now? And what should be done next? Thank you, Mishal. Again, very good case. Again, can you just scroll it up? We can have the history and the labs. So we'll discuss the teaching points of that. Any of the participants have any question over this case before I dwell on my opinion on this? Okay, now this is a young female, and it's a relatively common scenario in a busy liver clinics that they walk in with the antenatal clinics, then the hepatitis status is checked, they come up with a report of anti-HCV positive. And this is the most anxious moment of the family when they come across a pregnant lady with hepatitis B or C positive. But that again is a very important teaching point as well for us as a physicians and hepatologists, what to do with this patient and what are the risks related to the child which is being born, to the, what would happen after the birth, whether or not to lactate the child, and when to get treated. Can we treat it during the pregnancy? I'm sorry. So these are the common questions in the mind which we have to address while the first consult of a pregnant lady with hepatitis report. For hepatitis C, the mother to child transmission is not that significant that we can, and there is no remedy available for that as well. So we can reduce the risk of mother to child. But luckily, it's much lesser than hepatitis B and HIV. So mother to child transmission remains lower, though anti-HCV may be positive on newly born child that these antibodies crosses, so they may be falsely positive. So child status has to be checked at least 6 months after, preferably after the 7 to 8 years. So by that time, you may offer some treatment as well if the child is positive. Otherwise, you just add on anxiety to the family. Coming back to this lady, pregnancy, so mother to child transmission is lower. So we have to counsel the family. They don't have to panic. Getting test done or initial evaluation is advisable, but not mandatory. Particularly in cost constraint practices which we do in public sector, we may not ask them to get so many tests done because we would like the pregnancy to complete naturally. There is no specific indication for cesarean section, and there's no data whether it supports the cesarean section reduces the risk of HCV transmission in child or HCV transmission in child. So a normal natural course of the pregnancy has to be followed. If there is any indication of cesarean section obstetrically, yes, that may be carried on, but not specifically for liver context or HCV context. Coming to the childbirth, once the child is born, a lactation phase of 6 months has to be encouraged. These ladies have to be counseled repeatedly that during the pregnancy and antenatal visits that they would continue to breastfeed, because everybody in the mohalla or rishdar and everybody would say कि नहीं जी आपको hepatitis C है आप बच्चे को दूध ना पिलाएं, and that is not advisable. We should encourage our patients to breastfeed the child for at least 6 months. If they wish to continue for a year, that is their opinion. But we have to ensure before getting the next pregnancy, they should get their HCV treated. So after the 6 months, as she is now here after 5 months of pregnancy, and the tests are showing
HCV PCR positive APRI of 0.5, which I have just calculated while talking. So 0.5, it makes non-cirrhotic liver, 3 months of soft TECLA or soft FELPA, whatever your current practice is. My preference remains for the soft TECLA. We can treat her for the soft TECLA here after a month when she weans off the child. In this month, we would ask the patient, we are going to start after a month. In this time, you wean off your child from the breastfeeding, because breastfeeding is not advisable during the treatment. It can be continued if the patient wish not to get treated during this phase, but for that, you must advise patient to ensure contraception so that she get her treatment completed before next pregnancy. Because for conception, again, once we are started the treatment, we would ask her to continue contraception at least 6 months after the treatment again. So that would be advised with this particular case. APRI 0.5, chronic viral hepatitis C, no cirrhosis, 3 months soft TECLA, soft FELPA is advisable. For breastfeeding, she have to start weaning so that after a month we can start with the therapy. Michelle, what was the next question? So next, what should be done next? Like how to treat this patient? That I have already responded. Once we should ask her to start weaning. After a month, we'll start with DA therapy. During the DA therapy, she cannot breastfeed. And next is to ensure contraception so that she doesn't get pregnant during the treatment and after 6 months of the treatment. There's a question from Dr. Mariam, I remember. And if baby turned out to be HCV positive after 6 months, at what age can offer treatment? Excellent question again, Mariam. We have got Retipasvir, one brand was launched. I'm not sure it's still available or not. One of the pharmaceutical did launch Retipasvir, and Retipasvir is approved for the treatment of the children from the age of the 6th year. As we all know, hepatitis C is slow growing virus. It doesn't grow very fast. It doesn't lead to cirrhosis in few years. It takes years and years. And for perinatally transmitted HCV, it may take up to 20 years to lead to cirrhosis. So again, this is part of the family counseling that we should counsel them, that they don't have to worry about. At 6 or 7 years of the age, we can test the child. Again, if the HCV is still positive and PCR is positive, we can start with the treatment with Retipasvir and Decletasvir. I hope that answers the question of the Mariam. Do we have any other question from the audience? सर ये जरा EGFR का फार्मूला प्लीज बता देना. अच्छा, ये EGFR का फार्मूला ऐसा है कि एमडी कैल्क की आपके पास वो है ऐप फोन में? हाँ जी. एमडी कैल्क के अंदर आप EGFR लिखेंगे तो आ जाएगा. उसके अच्छा, अंदर वो अच्छा. उसके अंदर आपने एज डालनी है और क्रेटिन डालनी है और जेंडर डालनी है. इट विल कैलकुलेट. ओके. ईपीआई ठीक इक्वेशन के नाम से है, सीकेडी ईपीआई इक्वेशन के नाम से EGFR. आप वैसे भी अच्छा. GFR ही खाली लिखेंगे तो वो नीचे हाँ. स्क्रॉल डाउन डिस्क के अंदर जो है ना, अच्छा सीकेडी जी. ईपीआई इक्वेशन के नाम से, क्योंकि आजकल ईपीआई इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस जो EGFR कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है. ठीक ठीक सर, थैंक यू. Any other question? So the hepatitis C के दो डिफरेंट हमने आज एस्पेक्ट डिस्कस किए, जो कि one was related to extrahepatic manifestations and another was with the pregnancy. Routine treatment हम डिस्कस करते रहें. You are all encouraged to bring your own cases of your practices, and if you want to share yourself, it's more than welcome. But if you are not very fond of presenting your cases, you can send it to Uzair or
Kiran, anyone of our team members, they would be happy to present your case without any specific identification, because as a practice we don't identify the patients, nor we are going to identify the practitioners if they don't wish to be uh, named for this case. Any other comment? Otherwise we can, आज जल्दी हम लोग इसको कर सकते हैं. सर मुझे पूछना था कि एप्री. डॉक्टर मिशाल आप म्यूटेड हैं. ओके सर, मुझे एप्री के बारे में पूछना था कि एप्री हम कैलकुलेट करते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, लेकिन ये मैंने देखा है कि ज्यादातर जो है ना मतलब एप्री अगर ज्यादा आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए इसके लिए? ये एप्री का तो फिर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. नहीं, एप्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ इसीलिए है कि अल्ट्रासाउंड इज ए पुअर मार्कर फॉर पिकिंग अप अर्ली सिरोसिस. ठीक है ना. सिरोसिस जब एडवांस हो जाती है, लिवर श्रंक हो चुका होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की फाइंडिंग्स आ जाती हैं, तब अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है ना वो सिरोसिस नजर आती है. सारी एप्री की या फिर फोर जो भी स्कोर आप यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर फॉर नॉन इन्वेजिव मार्कर, उसकी इंपॉर्टेंस यहीं पे है कि ये बहुत अर्ली पिक करता है कि कौन सा पेशेंट जो है वो पोटेंशियली सिरोटिक लिवर के साथ है या स्टिफ है जो कि आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है. इसी वजह से हम एप्री को इतनी इंपॉर्टेंस देते भी हैं कि इट्स वेरी सिंपल चीप. मतलब एक एएसटी कराना होता है, प्लेटलेट कराना होता है आपको, यू कैन हैव द पेशेंट केस को आपने जो है, ये पेशेंट जो है वो सिरोसिस अर्ली हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1.5 का आप कट ऑफ लेते हैं तो एनीथिंग मोर देन 1.5 इज अनप्रूवन until unless proven otherwise is cirrhotic liver. अगर 0.7 का कट ऑफ लेते हैं तो दैट कंफर्म्स कि इसको सिरोसिस नहीं होगी. द प्रॉब्लम इज बिटवीन 0.7 to 1.5. अभी जिस तरह हम पब्लिक सेक्टर के अंदर मास ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स में यूज कर रहे हैं, जिस तरह इजिप्ट वगैरह में यूज हुआ, या अभी रिसेंटली हम लोग एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कंबर के अंदर, जहाँ पे हम डोर टू डोर स्क्रीनिंग करके और पॉपुलेशन वाइड जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लान कर रहे हैं ट्रीटमेंट एचसीवी, जो एचसीवी फ्री डिस्ट्रिक्ट के तौर पे, मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे हो. तो व्हाट वी आर यूजिंग देयर इज 1.5 कट ऑफ, कि 1.5 से ज़्यादा है तो आप 6 महीने की ट्रीटमेंट दें, और 1.5 से कम है तो आप 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट दें, क्योंकि इट इज़ प्रूवन कि ये अर्ली सिरोसिस को पिक करता है, और अर्ली सिरोसिस पिक करने की वजह से ये नॉन रिस्पॉन्डर्स को या पुअर रिस्पॉन्डर्स को जल्दी पिक करता है. तो आप प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट दें या राइबाविरिन ऐड करके दें तो इस पेशेंट में रिस्पॉन्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं. जी मिशाल, does that answer your question? जी सर. जी सर, थैंक यू. सर ये जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स हैं, इनका रीनल फंक्शन टेस्ट पे तो कोई वो नहीं है. अगर जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट खराब है, इस पेशेंट का तो 1.5 क्रेटिनिन है, अगर इससे ज्यादा होता तो हम स्टार्ट कर सकते थे. अच्छा, जो पेशेंट इवन डायलिसिस पे भी होते हैं उन पे भी हम जो है ना एंटीवायरल देते हैं. सोफिस्पिविर का अब तक काफी डेटा आ चुका है. ओके, प्रोडक्ट लेवल आज भी कहता है कि 30 से कम के ऊपर इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन ये कि जो ऑन ग्राउंड रियल वर्ल्ड डेटा है वो शो करता है कि सोफिस्पिविर इज वेरी सेफ. टेक्लेटेस्विर और वेल्पेटास्विर अगेन आर safe to be given in renal disease patients. There is some practice ke people prefer valproatasvir with sofosbuvir in chronic या acute kidney injury, but there is no data behind ke valproatasvir is harmful. Though there are few more papers for valproatasvir for safety in renal disease. In my practice, I use both of them equally. कि अगर renal status हो, जो प्रोडक्ट टेबल है वो 30 से कम पे इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर वी आर यूजिंग इट इवन द हीमोडायलिसिस पेशेंट्स. ऑलराइट. जी, एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट?
जी अस्सलाम वालेकुम। ये इन केसेस से रिलेटेड तो नहीं है सर। एक मेरा छोटा क्वेश्चन है। एक मेरा पेशेंट है, उसको अर्ली कोर्स टेक्सचर लिवर का आया। एएलटी उसका 89 और एएसटी 60 है, जबकि सीबीसी नॉर्मल है, प्लेटलेट वगैरह सारा कुछ ठीक है। कंप्लेंट उसकी है कि ब्लैक कलर्ड ब्लीडिंग पी आ रहा है। उसका थोड़ा सा मुझे गाइड करें भी, उसको फर्दर मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू अनवर साहब। अगेन एक रियल लाइफ क्वेश्चन है। अब ये पेशेंट जो कि आपको मिलेना के साथ आ रहा है, ब्लैक कलर स्टूल्स, मतलब ये टिकट ऐसे मिलेना इज जी। सिम्टम ऑफ अपर जीआई ब्लीड ना, कि अच्छा। अगर जो हमने पहले हिस्ट्री लेनी है उसमें ये देख लेना है कि कोई आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह तो यूज नहीं कर रहा ये पेशेंट, क्योंकि सीबीसी ठीक। नॉर्मल है। तो हाँ जी, अगेन विद अगर प्लेटलेट्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हैं तो हाँ जी। पोर्टल हाइपरटेंशन के होना के चांसेस कम हैं, बट इट इज नॉट एक्सक्लूडेड। लेकिन लेकिन इट इज अपर एएलटी एसटी, हाँ जी, एएलटी एसटी एएलटीएसटी ज्यादा हुआ। एएलटीएसटी ज्यादा बढ़ा हुआ है। विल टॉक ऑन। लेकिन क्योंकि जब ब्लीडिंग आ जाती है तो सबसे पहली तरजीह ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे ठीक। वी कीप ऑन टीचिंग के देयर आर सम रेड फ्लैग साइंस जिसमें ब्लीडिंग सबसे पहले आती है। अब सिरोसिस सही। को है नहीं है, इसको नेफिल्ड है या नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम है या नहीं है, दैट गोज बैक। अभी तो वो ब्लीडिंग की मैनेजमेंट है, ब्लीडिंग इमरजेंसी है। इमीडिएटली ये पेशेंट को ब्लीडिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर तो इसकी आयरन वायरन की कोई नहीं है और सीबीसी नॉर्मल है तो वी कैन वेट फॉर 2 और 3 डेज कि हम इसका आयरन बंद करा के इसको फिर चेक कर लें कि इसके ये ब्लैक स्टूल्स खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर पेशेंट की एच बी थोड़ी बहुत भी जो है वो कम है, या फॉर दैट मैटर ऑल सेफ्टी, इस पेशेंट की अपर एंडोस्कोपी हो जानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अपर एंडोस्कोपी या अपर जीआई ब्लीड की कॉज को इवेलुएट करने के लिए चाहिए। कमिंग बैक टू अदर के, अगर इसको ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है ना, और ये पेशेंट आता है जी। डी रेंज एएलटी के साथ और एक कोर्स फ्रैक्चर ऑफ लिवर के साथ नॉर्मल उसके कहते हैं सीबीसी के साथ, तो एप्री फिफोर इसका हम कैलकुलेट करते हैं। अगर वो दोनों सिरोसिस वाली रेंज में नहीं आ रहे हैं अभी, खाली जी। एएलटी डी रेंज आ रहा है और कोर्स फ्रैक्चर आ रहा है, तो यह फैटी लिवर की कॉन्टेक्स्ट में की उसमें जा रहे हैं, तो इसको आप रिपीट एलएफटीज करवाते, प्रोवाइडेड वायरल हेपेटाइटिस के जो है मार्कर्स नेगेटिव हैं, तो एलएफटी रिपीट ठीक। करते 4 to 6 वीक्स में, जिसमें आप इसको कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करें, इसको एक्सरसाइज करने का कहें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कोशिश करके इसको बोलें थोड़ा वेट लॉस करे। तो आफ्टर 6 to 8 वीक्स इसका एलएफटीज रिपीट करें, एंड जी। देन सी कि इस पेशेंट कहाँ जा रहा है। दिस पेशेंट इफ कंटिन्यूज टू हैव deranged ALT may need hepatologist opinion for possibility of advising him for liver biopsy as well, अगर LFTs deranged रहते हैं और जी। कोई आपको कॉज नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसका पीसीआर भी कराना पड़ेगा, क्वालिटेटिव। नहीं पहले तो नहीं क्वालिटेटिव पीसीआर, पहले तो आप वायरल सीरोलॉजी कराएं ना। वायरल वो सीरोलॉजी अगर पॉजिटिव हाँ है, जी, वो मैं बताना बताना भूल गया। एचसीवी, एंटी एचसीवी पॉजिटिव है। एचसीवी पॉजिटिव है, तो इसका अगर एएलटी डी रेंज है तो लाइकली पीसीआर भी पॉजिटिव आ रहा होगा, तो इसका पीसीआर तो आपने अभी भी कराना होगा। तो फिर अब हम्म। ये उस डायरेक्शन में जा रहा है ना कि हेपेटाइटिस सी विद मेलिना, तो पहले आप एंडोस्कोपी करें, क्योंकि वायरल जो है एंटीवायरल थेरेपी बाद में आएगी, हाँ पहले जी, इसकी हाँ जो जी। है ना जीआई ब्लीड की मैनेजमेंट आएगी। जीआई ब्लीड को मैनेज करें, उसके बाद इसकी जो है ना पीसीआर इन द सेम टाइम आप भेज देंगे वो तो, और इसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे आफ्टर मैनेजिंग द जीआई ब्लीड। ठीक। ये सर ट्रांजामीन का कोई रोल हो सकता है इसोफेजियल वेरिसिस में? ट्रांसमीन का हमारा अपना एक बड़ा ट्रायल था जो यूके का स्पॉन्सर्ड ट्रायल था, बड़ा एनएचए में पब्लिश हुआ हुआ है हॉल्टेड के नाम से, एंड टर्न्ड आउट टू बी के इसका कोई बहुत रोल है नहीं इन अपर जीआई ब्लीड। हॉल्टेड अच्छा। के नाम से बड़ा ट्रायल है, वी वर पार्ट ऑफ दैट। पाकिस्तान के अंदर टोटल काफ़ी सारे बड़े जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट इसमें शामिल थे, जिसमें पिंडी के अंदर जो है होली फैमिली था, लाहौर के अंदर जो सर्विसेज हॉस्पिटल और न्यू जी। हॉस्पिटल भी था। तो काफी सारे सेंटर से 3,000 के करीब पेशेंट जो थे सिर्फ पाकिस्तान से थे, ओवरऑल 12,000 पेशेंट्स का ट्रायल था, एंड इट जी। एंडेड अप इन ए नेगेटिव ट्रायल के इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द पेशेंट्स हॉस्पिटल स्टे मोर्टेलिटी और रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स। राइट। ठीक। ठीक सर, थैंक यू। यू वेलकम।
Any other question or comment from the participants? एक सवाल ये है जी कि प्रोफेसर असद साहब क्यों नहीं आज नजर आ रहे? असद साहब प्रेसिडेंट साहब हो गए ना अब। नहीं बिजी थे, मेरा ख्याल है आज टाइम नहीं निकाल सके। अच्छा जी, यही बात है। वो बड़े बड़े अच्छे लगते हैं जब बोलते हैं ना, बड़े मजे के लगते हैं। एक्सीलेंट। थैंक मैं यू। बोले आपका बगैर भी पैगाम अच्छे लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी। तो आई थिंक वी शुड फिर वाइंड अप फॉर टुडे। यस श्योर, मेरा ख्याल है। ठीक है, If you don't have any further question from the participants. श्योर। थैंक यू डॉक्टर ज़ीशान। और जैसे कि आपने कहा है कि जिस तरह डॉक्टर अनवार आज आपने कोई केस डिस्कस कर रहे थे, अगर यू कुड हैव सेंड अस और हम इसको फॉर्मली भी इसको कर सकते हैं विद आर जो हमारा क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है केस का, तो इसके लिए ये है कि डॉक्टर मिशाल या हमारे कोई और उनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, या आप भी वी डू इनकरेज आप भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर सेशंस। और वी विल लाइक टू आल्सो इन्फॉर्म यू दैट जो अपकमिंग एको सेशंस हैं उसमें डाइजेस्टिव एको का सेशन है, एसिड रिलेटेड यूजीआई डिसऑर्डर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, प्रोज एंड कॉन्स, और ये प्रोफेसर बदर जुबैरी है एंड इट्स ऑन 18 जनवरी एट 2:30 PM आफ्टरनून का सेशन है ये। और इसके अलावा आईबीडी की एको सेशन है, ये जनवरी के सेशंस की मैं बात कर रही हूँ। इट्स आईबीडी मिमिक्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस बाय डॉक्टर जुनेद मुश्ताक चीमा, और ये इट्स ऑन 25 जनवरी और ये रात को 10 बजे है। और हम आई थिंक गुजैर विल सून शेयर द बैनर ताकि आप इस पे रजिस्टर कर सके। और इसके अलावा वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी एंड फेरोसन्स लेबोरेटरीज फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड एजुकेशनल ग्रांट and especially our team Parsa Trust and Parsa Eco Pakistan. And once again, thanks again, Dr. Zeeshan, Dr. Mishal. Allah Hafiz from now. Uzair, you can call off the meeting. Sure, ma'am. Allah Hafiz, everybody. Allah Hafiz.